पिछले कुछ साल में क्या हुआ, ग्लोबल कंजम्पशन और ग्लोबल प्रोडक्शन 100 मिलियन बैरल एक दिन की थी। फिर रशिया यूक्रेन में युद्ध हुआ, रशिया प्रोड्यूसेस 11 से 13 मिलियन बैरल्स अ डे। तो एक पॉसिबिलिटी ये थी कि अब सब लोग रशिया से कच्चा तेल लेना बंद कर दें, तो अवेलेबिलिटी वुड हैव कम डाउन बाय 11-13। पर आप अपनी जनता को तो आप सप्लाई डिसरप्ट या स्टॉप नहीं कर सकते। सो वी वुड हैव बॉट फ्रॉम द सेम अदर नॉन सप्लायर्स। हम तो खरीदते भी नहीं थे रशिया से। आई एम कमिंग टू दैट। एंड व्हाट वुड हैव हैपेंड टू प्राइसेस? दे वुड हैव गॉट अप फ्रॉम जो भी थे उस समय, दे वुड हैव गॉन अप टू $138। और इन्होंने भी जब बातें की, सैंक्शंस की, जो कच्चा तेल रूस से हंगरी पाइपलाइन में आता था उसको एग्जेम्प्ट कर दिया, जो पाइपलाइन से रूस से चीन कच्चा तेल जाता था उसको एग्जेम्प्ट कर दिया, जो साखेलिन से जापान जाता था उसको एग्जेम्प्ट किया। तो बचे कौन? कुछ कम देश। एट दैट स्टेज वी वर बाइंग ओनली 0.2% फ्रॉम रशिया। पर हमें इस सिचुएशन को कन्फ्रंट करके नेविगेट करना था। तो हमने क्या किया? वी हैव बीन डाइवर्सिफाइंग आवर सोर्सेज ऑफ सप्लाई। रशिया से हम 0.2% खरीदते थे, उसको हमने बढ़ा के they became an almost equal supplier than the bigger, because our policy is जहां से भी हमें कच्चा तेल मिलेगा हमारी रिक्वायरमेंट के लिए हम खरीदेंगे, और हमारा टोटली ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। आवर कंपनीज विल बाय एट द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन डिलीवरी। तो कभी जब कुछ देशों का शेयर उसमें कम हुआ, जब उन्होंने देखा और से खरीदा, अब उन्होंने फिर अपने डिस्काउंट्स दिए। सो वी आर, आवर philosophy is nation first and the consumer is paramount. इसके अलावा हमने कुछ और निर्णय लिए। One of them is that हमने जो प्राइसिंग है, गैस प्राइसिंग, उस पे पहले हमारा सिस्टम था, हम 4 हब का प्राइस कैलकुलेट करते थे और 6 महीने 1 साल का दाम होता था, इसलिए द प्राइसेस इन द मार्केट वर नॉट अलाइंड विद द रियलिटी। तो हमने वो सिस्टम चेंज किया। वी नाउ मेड इट लिंक टू फॉर पर्पसेस ऑफ कैलकुलेशन टू द इंडिया बास्केट, और हमने इसकी कैलकुलेशन हर 15 दिन की और हर महीने उसने रिवाइज किया, और हमने फ्लोर प्राइस लगाई और एक सीलिंग प्राइस लगाई। $4 और $6, इसका मतलब $6 से ऊपर तो गया $6.5। सो टुडे I think this is a great success story. So अभी जब IAEA में हमारे कॉलीग ने मिनिस्ट्री से ये प्रेजेंटेशन की, it was universally acknowledged that India is a country which has been able to manage the cooking gas market in a very open, transparent, and in a manner which deals with issues of personal health, environmental issues, and it's being appreciated everywhere. So then अब कोई, और मुझे तो लगता है कि इसमें दुनिया भर में अगर हम प्राइस अभी ले आए हैं कितने, ₹503 फॉर अ सिलेंडर, फॉर उज्ज्वला सिलेंडर, और दूसरा सिलेंडर ₹803 है। अब व्हाट इज इट दैट कुड हेल्प अस टेक दिस जर्नी इवन फर्दर? पहली बात तो जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो एक के बाद एक स्टेप्स ले रहे हैं अपनी प्रोडक्शन को कर्टेल करने का। मुझे जहां तक याद है, ओपेक प्लस ने शायद अपनी प्रोडक्शन जो है, जो 102 मिलियन बैरल टोटल थी, उसमें 5 मिलियन बैरल कम कर दिए और उसको कर रहे हैं। 5 मिलियन बैरल कम करने के बावजूद भी प्राइसेस नहीं बढ़ी, which means the market is absorbing it. How much can the market absorb? It's not for me to say, because I don't know. One of the reasons the market has absorbed the 5 million barrels cut is because one large economy, $19 trillion or so, or you will guess which one it is, its consumption is not growing.
In fact, there is even some suggestion there, and in parts of Europe, energy consumption is stable and declining, which means that there may be indicators of global recession, or rather recession in those countries. अगर आपकी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट जो है या जीडीपी जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टैग्नेट करता है या नीचे आता है, उसका मतलब यह है कि यू आर इन टेक्निकली इन रिसेशन, एंड दैट इज हैपनिंग टू सम बिग इकोनॉमीज इन यूरोप. एंड टू दैट यू एड द सिचुएशन इन व्हाट इज broadly described as the Red Sea area. Every morning when I get up and I look at the news, or late at night when I look at the news, there are some trigger points or flash points which you are looking at. And I think as long as anyone is petroleum and natural gas minister, that will come automatically. आप देखते हैं कि ग्लोबल सिचुएशन क्या है, वो हूतीज ने किसी को अटैक तो नहीं किया, और किसको किया है, शिपिंग कॉस्ट का उसका क्या हो गया, क्योंकि हम शिपिंग कॉस्ट के साथ रिलेटेड नहीं है, पर आपका सप्लायर तो रिलेटेड है. जब आप टेंडर फ्लोट करेंगे और कहेंगे कि मुझे इतने क्वांटिटी चाहिए डिलीवर्ड एट अ पोर्ट, वो जब टेंडर करने के समय वो भी और बाकी लोग दे विल टेक द शिपिंग कॉस्ट इनटू अकाउंट. बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, आई टेल यू, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट that the situation as it is and the situation as it is likely to evolve has a lot of space for us to navigate in the interest of our consumers, to ensure availability, which has not been affected at all in the last few years, affordability, which you are seeing an evidence of, and transition to green fuels, sustainability. I'm not going to repeat my favorite story on biofuels. Yesterday I was in Uttar Pradesh with the Honorable Chief Minister. He inaugurated a compressed biogas plant in Gorakhpur. It's not that that plant is going to provide employment. The plant is going to provide an outlet for the parali, which otherwise would be burned. And the farmer is being compensated for the parali. But I think the real story is that plant will also use, apart from the parali, compressed mud, gobar, and the farmer jisse gobar liya jayega, he will also gain from it. As a result of which, on the livestock, looking after our family of livestock, we get a gain there also. Or the situation of that plant in Gorakhpur means in the southern part of Gorakhpur, which is one of the most backward areas, वहां की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन उससे भी शुरुआत हो जाती है, एकदम शुरू हो जाती है. और 160 करोड़ का ये प्लांट है. पीछे मैंने बदायूं में 2 और प्लांट, I was associated with the inauguration. So there is work happening on biofuels, compressed biogas. UP has announced a policy on green hydrogen. And I'm sure that the green hydrogen work that we are doing, suddenly one day the takeoff will come. Now I think I also wanted to share some information with you on building for the future pipelines and CGD LNG infrastructure. दोनों के लिए we have taken the figure up to 2014, and from the next one is up to 2024. Crude oil pipeline length is given there. Product pipeline length is given there. 14,000 से हो गए, 23,000 हो गए. Operational natural gas pipeline 15,340 से उठ के 24,623 हो गई है. LNG टर्मिनल्स 2013-14 में 4 थे, अब 7 हो गए. कैपेसिटी ऑफ LNG टर्मिनल्स ऑन मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम 22 से 47.7. PNG कनेक्शन जैसे मैंने बताया 25 लाख से 1 करोड़ 21 लाख हो गए. CNG आउटलेट्स पहले 966 थे, वो 6,258 है. So the story in every area
is a massive increase. But the real story, I think, is we are not done with it yet. जैसे नेचुरल गैस की पाइपलाइन है, अभी हम 22,000 तक पहुंच गए, हमें बहुत जल्दी इसको पूरा 33,000 तक 23,000 तक पहुंच गया, 33,000 तक पहुंच जाएंगे. व्हाट इज द टाइमलाइन यू वुड बी सेफ विद? He says 2030. I think it can be done earlier. I also don't want to go into E&P. आप कोई प्रोडक्शन, अरे भाई प्रोडक्शन आपने फील्ड्स की ही नहीं है, प्रोडक्शन कहां से होती?